Hello students, how are you all? Today we are starting with our chapter number 5 of biology section, that is the fundamental unit of life. Students, what is the fundamental unit of our life? You all know, you have studied in your lower classes. Yes, it is cell. So students, in this chapter we are going to study regarding cell and its structure and composition. Students, first of all, let us see how and when was cell discovered. Scientist named Robert Hooke, he made his own primary microscope. Okay, what did he do with his microscope? He took a small cork of a bark of a tree. उसने पेड़ के एक छोटे से bark में से एक छोटा सा cork लिया and observed that cork under the microscope which was self-designed by him. Okay, what did he saw? While seeing through that microscope, he saw some small boxes, छोटे rooms जैसे उसको दिखे थे. Okay, he cannot see clearly, he didn't saw anything clearly, but he saw small little rooms. So he named those little rooms as what? Cell. The word cell is actually a Latin word. Latin language का ये word है जिसका actual meaning क्या होता है? Small boxes, small rooms. तो क्योंकि उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू स्मॉल रूम्स दिखाई दिए थे, उसके लिए उसने क्या नाम दिया था? सेल. सो इन दिस वे द सेल वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1665. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ सेल डिस्कवरी. ओके, I have already told you that in the year 1665 Robert Hooke discovered what? Cell. Okay, with the help of a primitive microscope. Now, in the year 1674, scientist Leeuwenhoek, what is the name of the scientist? Leeuwenhoek, with the help of his improved microscope, he also designed a microscope which was of an improved version. He discovered the free living cells in pond water for the first time. उन्होंने पॉन्ड वाटर को लेकर उस माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसमें उनको क्या दिखाई दिया? फ्री लिविंग सेल्स दिखाई दिया. ओके स्टूडेंट्स, then came the scientist Robert Brown. What he discovered in the year 1831, he discovered the nucleus present in the cell. उन्होंने जब सेल को बहुत ट्राई किया माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए तो सेल के बीच में एक डार्क स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस. Then comes Purkinje. Scientist Purkinje in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. सेल के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना उनको कंबाइंडली उन्होंने क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म. ओके, हु? Purkinje in the year 1839. Then came the cell theory. Okay, who proposed the cell theory? Scientist Schleiden and Schwann. साइंटिस्ट श्रीडेन एंड श्वैन ने सेल थ्योरी प्रपोज किया. उन्होंने 2 पॉइंट्स दिया. पहला पॉइंट ये था दैट all the plants and animals are composed of cells. All plants and animals are composed of cells. और दूसरा क्या? Cell is the basic unit of life. Cell is the basic unit of life. These 2 points of cell theory was given by Schleiden and Schwann. Once again, cell is the what? Cell. All plants and animals are made up of cells, and cell is the basic unit of life. Then came scientist Virchow. Okay, he extended the cell theory. सेल थ्योरी एक्सटेंड करके उन्होंने क्या बताया? दैट ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. कोई नया सेल अलग सा पैदा नहीं होता है, पुराने वाले सेल में से न्यू सेल्स बनते हैं. इन दिस वे देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ सेल थियरी. सो स्टूडेंट्स, लेट अस वंस अगेन रिवाइज द पॉइंट्स ऑफ सेल थियरी. दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल एनिमल्स आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. Scientists Schleiden, Schwann and Virchow, these are the scientists who proposed cell theory. Okay students, now let us discuss about types of organisms. Students, we have studied in our lower classes also that organisms made up of single cell are known as what? Yes, unicellular organisms. Uni means single. जो organisms एक single cell से बने होते हैं, they are known as what? Unicellular organisms. Can you name some of the examples of unicellular organisms? Yes, amoeba, paramecium, some bacteria, and one more, chlamydomonas. Once again, amoeba, paramecium, bacteria, chlamydomonas. These are all examples of what? Unicellular organisms.
Now next is what? Multicellular organisms. Yes, what do you mean by multicellular organisms? Organisms made up of many cells, more than one cell. They are what? Multicellular organisms. All fungi, maximum fungi, then higher plants and animals. We are all what? We are all examples of multicellular organisms. Now let us look at the figure showing some of the cells from the human body. Students, you can see that figure shows some of the cells present in our human body, like nerve cell, which is the largest cell of our body. Okay, then you can see sperm cell. Okay, then ovum also. These are the various blood cells, various shapes, various sizes. You can see some are big, some are small, some are round in shapes, and some are spindle shaped, that is thread like structures. Okay, so different types of cells are present in human body, and all cells perform different types of functions. Now students, a statement is said that cell is what? It is the structural and functional unit of life. Why is cell called as a structural and functional unit of life? Because all living organisms are made up of what? Cells. पूरे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है? एक एक सेल को जोड़ के बना हुआ है. सो सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाउ दैट सेल ओनली इज द स्ट्रक्चर विच परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, है ना. सारे बॉडी का फंक्शंस जो है वो एक एक करके सेल के थ्रू ही होते हैं. सो सेल इज ऑल्सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी. सो दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोल सकते हैं? दैट व्हाट? सेल इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जीता है बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स फंक्शन. सेल बराबर परफॉर्म करते हैं फंक्शंस, एंड सो आवर बॉडी वर्क्स. ओके स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, यू माइट think that what is a cell made up of? सेल किस चीज से बना होता है? What is the structural organization of a cell? सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? Okay, to answer all these questions, let us start to understand regarding the structure of a cell. The first structure we are going to study is plasma membrane or cell membrane. What is a plasma membrane? Plasma membrane is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो अंदर की सेल के अंदर की चीज़ों को बाहर के एनवायरनमेंट से क्या करता है? सेपरेट आउट करता है. नाउ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सच दैट इट अलाउस और परमिट्स ओनली फ्यू मटीरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होते हैं? ये क्या है? कुछ ही चीज़ों को क्या करते हैं? सेल के अंदर आने देते हैं या फिर सेल के बाहर जाने देते हैं. दे डोंट अलाउ ऑल मटीरियल्स टू गेट इनसाइड और गेट आउटसाइड ऑफ द सेल, सिंस इट अलाउज ओनली फ्यू थिंग्स. ओके, सो इट इज नोन एज व्हाट? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कुछ ही चीज़ों को क्या करता है? सिलेक्टिव चीज़ों को परमिट करता है सेल के अंदर और बाहर जाने में. ओके स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट इज दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड व्हाट? एंड प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बने होते हैं. नाउ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ डज द गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल? The process through which these gases exchange is known as diffusion. It is known as what? Diffusion through the plasma membrane. Okay, let us understand the process कि किस तरह से ये दोनों gases जो है plasma membrane के through आते जाते हैं. तो first of all, let us understand that the concentration of oxygen outside the cell is more and inside the cell it is less. When we breathe in, the oxygen reaches to each and every cell. सेल के बाहर तक ऑक्सीजन ज़्यादा है और सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है. So the oxygen will diffuse from higher concentration to the lower concentration. So the oxygen will diffuse from outside the cell to inside the cell. Okay students, in this way the oxygen will get inside the cell. Now once the oxygen reaches the cell, the oxidation of the food takes place and carbon dioxide is produced. What is produced? Carbon dioxide. Now the concentration of carbon dioxide is what? Higher inside the cell and it is lower outside the cell. सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा है और सेल के बाहर कम है. सो बाय द सेम प्रोसेस डिफ्यूजन, द कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द outside the cell.
सेल के अंदर से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, सो इट विल डिफ्यूज फ्रॉम इनसाइड टू outside. In this way, the gaseous exchange takes place through selectively permeable membrane. The phenomenon here is what? It is diffusion. Okay, by this diffusion process, the gaseous exchange takes place. Similarly, water also obeys the laws of diffusion. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane, the movement of water molecules from higher concentration to the lower concentration through such a selectively permeable membrane is called what? Osmosis. Yes, we are defining an important term. What is osmosis? Osmosis is the movement of water molecules from higher concentration to the lower concentration through a selectively permeable membrane. So in the same way, when the concentration of water is higher inside or outside the cell, the water will move from the higher concentration to the lower concentration through the process of osmosis. Okay, students? Now we are going to study regarding three important types of solutions. Yes, three important types of solution. First is hypotonic solution, then isotonic solution, and then hypertonic solution. So what is hypotonic solution? Hypotonic solution, first type of solution. The solution in which the concentration of water outside the cell is higher and the concentration of water inside the cell is lower. वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है. So what will happen? Water will flow from higher concentration to the lower concentration. So water will flow from outside to inside. So what will happen? The cell will gain water, okay, by the process of osmosis, and the cell will swell up. वो फूल जाएगा cell. Such type of solution is known as hypotonic solution. Second is isotonic solution. The solution in which the concentration of water outside the cell and inside the cell are same. सेल के बाहर और सेल के अंदर सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर है, सो द वाटर विल नॉट फ्लो फ्रॉम एनीवेयर. ओके, सो देर इज नो चेंज इन द साइज ऑफ द सेल. Such type of solution is known as what? Isotonic solution. Then comes hypertonic solution. Okay, if a cell is kept in such a solution where the concentration of water is less outside the cell as compared to inside the cell, मतलब यहाँ पर सेल के अंदर पानी ज़्यादा है और बाहर कम है. Okay, what will happen at that time? The water always flows from higher to lower concentration. So the water will flow from inside to outside. तो सेल के अंदर का पानी खत्म हो गया due to which the cell will shrink. सेल पूरा सिकुड़ जाएगा. Okay, such type of solution is known as what? Hypertonic solution. So students, we have studied regarding what? Three different types of solutions: hypotonic, then isotonic, and then hypertonic solutions. Now students, we are going to understand a term known as endocytosis. What is endocytosis? Students, sometimes some organisms obtain their food with the help of their plasma membrane. अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हेल्प से वो फूड अपना इंजेस्ट करते हैं. दे एनगल्फ द फूड. ओके, सच प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस. द बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट? अमीबा. अमीबा एक्वायर्स इज फूड थ्रू द एंडोसाइटोसिस. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment. Such processes are known as endocytosis, and the best example is what? Amoeba. Amoeba performs the process of endocytosis. वो सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करता है. यू कैन लुक इनटू द फिगर ऑल्सो. सेल मेम्ब्रेन आगे बढ़ रहा है एंड इट एनगल्फ्स द फूड को कैप्चर कर लेता है अपने अंदर with the help of its plasma membrane. So this process is known as endocytosis. So students, by this we end our first session of our chapter number 5, okay, biology. Here in this chapter we have studied regarding the discovery of cell, then we have seen cell theory, then we have seen unicellular and multicellular organisms, then we have seen the structure of plasma membrane and how do the gases oxygen and carbon dioxide diffuse inside and outside the cell. Then we have seen some types of solutions, and then what is endocytosis. Students, note down all important points in your notebook. We will meet in the next session with the new topics. Till then, thank you students.